स्टैंडर्ड 8 सब्जेक्ट साइंस है, चैप्टर 7 है कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। पहले मैं इसको एक्सप्लेन करवाऊंगी, फिर इसके क्वेश्चंस MCQs फिल इन द ब्लैंक्स करवाऊंगी। पहले है डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन इज अ मेजर थ्रेट to the survival of wildlife. Plants utilize atmospheric CO2 for photosynthesis. Deforestation increases the temperature and pollution level on the earth. Increase in the amount of atmospheric CO2 lead to global warming. Biosphere is a part of the earth in which living organisms exist. Biodiversity refers to the variety of living organisms in a specific area. Panchamashi is a biosphere reserve. Protected area means an area declared to protect our flora and fauna and their habitats. Protection of an area of biological importance is a part of our national heritage. Endemic species are those species of plants and animals which are found exclusively in a particular area. Species is a group of population which are capable of interbreeding. Wildlife sanctuary is area where animals are protected from any disturbance to them and their habitat. National Park. National Park is a large reserve and diverse enough area to protect whole sets of ecosystem. Ecosystem is made of all the plants, animals and microorganisms in all area along with abiotic components. Next, extinct organisms are those who existed in the past but do not exist in present. Example, dinosaur. Endangered species are those whose numbers are diminishing to a level that they might face extinction. Next, Red Data Book though contains a record of endangered species. Migratory birds fly to far away area every year during a particular time because of climate changes. To make 1 ton of paper, 17 full good ground trees are required to be cut. Plantation of more trees is required to remain green wealth on the earth. Forestation. Forestation can be done by 2 ways: 1 social forestation and 2 natural forestation. Reforestation is restocking of the destroyed forest by planting new trees. Next है इसके fill in the blanks हैं. Number 1, a place where animals are protected in their natural habitat is called sanctuary. Fill in the blanks में क्या लिखना है? Sanctuary. A place where animals are protected in their natural habitats is called sanctuary. तो blank में आएगा sanctuary. Next, number 2, species found only in a particular area is known as, क्या आएगा? Is known as endemic. तो specific found only in a particular area is known as
endemic. Number 3, migratory birds fly to far away places because of blank changes. तो क्या आएगा? बिकॉज ऑफ क्लाइमेटिक चेंजेस. फर्स्ट में आया सेंचुरी, सेकेंड में आया एंडेमिक स्पेसीज एंड थर्ड में आया क्लाइमेटिक. ये आपको क्या हो गई? फिल इन द ब्लैंक्स हो गया. अभी मैं इसके आपको डिफरेंस बिटवीन करा दें जो आपको करना है. वाइल्ड सेंचुरी एंड बायोस्फीयर रिजर्व. अभी 1 पॉइंट आएगा वाइल्ड सेंचुरी का, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का. इट इज़ एन एरिया वेयर एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी डिस्टर्बेंस टू देम and their habitat. Biosphere, it is large area of protected land for conservation of wildlife, that is plant and animal resources. Number 2 point, wildlife का hunting and poaching of animals are prohibited area. Number 2 point, biosphere का आएगा many sanctuaries and national parks are included in जू एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. जू का फर्स्ट पॉइंट आएगा इन अ जू वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स आर एनक्लोज इन केजेस. वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स आर फ्री इन फॉरेस्ट. नंबर 2 जू का इट प्रोवाइड्स आर्टिफिशियल हैबिटेट ऑलमोस्ट सिमिलर टू देयर नेचुरल हैबिटेट. नंबर 2 वाइल्ड लाइफ का इट इज़ अ नेचुरल हैबिटेट. नंबर 3 पॉइंट है केयर ऑफ एनिमल्स फॉर प्रोटेक्शन, फूड, हेल्थ एक्सेट्रा आर टेकन इन अ जू. मेन एम ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज प्रोटेक्शन, सो ऑल दोज एक्टिविटीज विच हार्म टू एनिमल्स आर स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड. नेक्स्ट है एंडेंजर्ड स्पीसीज एंड एक्सटिंक्ट स्पीसीज. एंडेंजर्ड स्पीसीज का फर्स्ट पॉइंट आएगा द स्पीसीज विच आर एट द वर्क ऑफ एक्सटिंक्शन आर कॉल्ड एंडेंजर्ड स्पीसीज. नंबर 1 एक्सटिंक्ट स्पीसीज का द स्पीसीज विच एक्सिस्ट नो मोर ऑन द अर्थ आर कॉल्ड एक्सटिंक्ट स्पीसीज. Number 2 by protective measures such as sanctuary, national park, protected projects, such species can be saved. Number 2 point आएगा वाइल्ड extinct species का such species can not be revived again. Number 3 point आएगा tiger, lion, elephant, wild buffaloes and Brashinga are endangered species. Dinosaur is an extinct species. अभी नेक्स्ट है फ्लोरा एंड फौना. नंबर 1 फ्लोरा का all the plant species in a particular habitat and called flora of that fauna. अभी fauna, all the animal species found in a particular habitat are called fauna of that area. Number 2 point है the greenery on the earth is due to flora. Number 2 point है fauna का members of fauna are directly or indirectly depend on flora for their other requirement. Number 3 the flora का the members of flora are able to perform photosynthesis and absorption from atmosphere. दूसरा इसका थर्ड पॉइंट है the members of fauna are unable to perform photosynthesis and unable to absorb CO2 from atmosphere. Number 4 salt, tea, mango, palm, etc. the flora. Chinkara, blue bull, barking deer, etc. चितल, वाइल्ड डॉग एंड एक्सेट्रा आर fauna. ये आपका क्या हो गया? ये आपके मैंने आपको डिफरेंस बिटवीन करवा दिए, न्यू चैप्टर भी आपको समझा दिया. ये आपको क्लास वर्क की बुक में और होमवर्क की बुक में लिखना है और इसे लर्न